Hi guys, welcome to this live session. Now, just give me a minute or so. Okay, so in this session we are going to solve the problems that were there in the DPP sheet that I have already shared with you guys in the Telegram group. I hope you guys have the DPP with you all. Okay. And I also understand that a major part of the audience is going to watch this on a recording basis or a recorded basis. So it's fine. I mean, we'll see how we can maneuver ourselves into this course. Okay. So I'll start the session now. I'll come back and forth to see comments or anything else. Okay. So in the quant section, this was the first question that we had. So let us see how we could have solved this one. So I'll just read the statement and I'll probably just give you guys also some time. So if you want to probably pause, you can pause it and solve it. Okay, so I hope you guys have read the question. So now I'll start solving this one. So the question basically talks about this year. The summer was the worst one that has been witnessed in the last decade. There were some showers only twice during the entire summer. That of course brought some relief to the resident of the city. The drop in temperature in degrees Celsius from the previous day varies directly as the square root of the rainfall in millimeters. So this is the only information that is important for me. Anything that summer is how hot or cold, this is redundant data. Okay, obviously because we are doing an analysis, I'll be able to tell you that you can maneuver yourself quickly without even looking too much into these type of details. The only thing that I have to take into my consideration is this one: the drop in temperature in degrees Celsius from the previous day varies directly as the square root of the rainfall in millimeter. So I can probably write it like T, okay, something like that. I'm just giving it a and this T basically denotes the drop in temperature. And what type of a drop? From the previous day, okay, so this is something that we need to understand. So whenever you look into the statement, you will look out for trigger words. So my trigger word was that where am I going to start looking from? Okay, so this is, so far it is very easy. Now the question says on April the 25th 22nd, 25 millimeter of rainfall was recorded. That day it was pleasant with the temperature recording was 32 degrees Celsius. Now interestingly, whenever, see, this is a problem based on variations, and interestingly, anybody who has ever solved problems on variations would know that typically when x is proportional to y or x is directly proportional to y, whatever, and we have to sort of convert the sign of proportionality into an equality sign. Okay, give me a second. So these equality sign, what it helps me with is that I can use all the operations of an equation and I can solve, and the usual way of solving it is, I suppose that there is a constant of proportionality that replaces this proportionality sign and brings in about the equality sign. Okay, having said that, this is pretty much understandable that the moment I see a 25 millimeter of rainfall, I know that 5
because the fall in temperature is given, the drop in temperature is given proportional to root over 5. So I know that this is 5 degree Celsius का difference, 5 degree Celsius का difference. Now what do I need to know? That day it was pleasant with the temperature recording was 32 degrees Celsius. Okay. So what can I do with this? Okay, what can I do with this? So far everybody is clear with the statement. Okay, let me clear out some space. And before I actually solve the thing, I should read this entirely. So far we have understood that this t is proportional to the square root of r. Okay. And that day it was pleasant with the temperature recording was 32. It was quite a relief from the relief for the citizen who witnessed 42 degrees Celsius the day before. Okay. On May the 16th, there was a rainfall of 36 millimeter. The temperature on May 15th was 44. What was the temperature on May 16? Now, basically what they're asking you to find out is the constant of proportionality. If you are able to find out the constant of proportionality, you will be able to answer this question. So 32 degrees Celsius and 42 degrees Celsius. So what is the actual drop in temperature if I ask you? So the actual drop in temperature is 10 degrees Celsius. That is equal to, now see what I am doing. I am removing the proportionality sign into the equality sign. Okay. The moment I change the proportionality into equality, there is a constant of proportionality that comes into the picture, and square root of r, which is the rainfall that is recorded in the first case. Okay, which is the 22nd April wala case, root over of 25 is 5. So basically k comes out to be 2. The moment I know that k is equal to 2, and they have asked us, what exactly have they asked us? They have asked us on 16th of May there was a rainfall of 36. Okay, so 36 square root of that 36 becomes, square root of that 36 becomes 6, multiply that by 2, you know it is 12. Okay, this is the drop in temperature, mind you. Okay, this is the drop in temperature for that 16th May का situation. Now previous day का उसने दिया है कुछ, the temperature on May 15th was 44. Okay, so the question is, if previously it was 44 and today I received a drop of 12 degree Celsius, तो आज का temperature कितना है? Simply you will just subtract 12 from that, you will get 32 degree Celsius. So the answer to this question is 32 degree Celsius. Okay, that is the answer. I hope that makes sense. I took some time to explain, but the idea again with proportionality variation question is always you have to find the constant of proportionality, and as swiftly as easily you can find it, you will be able to maneuver your way through the questions. Okay, so fine, no questions. Great, let's go to the next question then. Okay, a good one. This is the only question that probably will take us some time. Two brothers, Ram and Sham, each had sticks of equal length. Ram divided his sticks into parts of 7 cm each and had a small part of 2 cm left. Sham divided his stick into parts length of 9 cm each and had a small part of 3 cm left. Okay, so far let's try to understand the situation. Basically these two brothers, Ram and Sham, they have a stick. Okay, so suppose, and these sticks are of equal length. Okay, the width does not really matter to me because the length is the only idea. Okay, the moment I saw this question, I knew that this is a question of number system, but not straight up number system. I don't really want to give it any formula, anything. Okay, I just wanted to read it and solve it in my own possible way. So ideally पहला जो पहला बंदा है राम, उसने 7 सेंटीमीटर और एक और 7 सेंटीमीटर करके उसने लास्ट में देखा कि 2 सेंटीमीटर उसका बच गया. सो लास्ट पार्ट he has not been able to chop
into a 7 centimeter stick. So understand that I have a stick. For example, suppose this is the stick and I am making sections of 7 centimeter each. और लास्ट में जाके क्या होता है, I see एक 2 सेंटीमीटर का ही बच गया है, उसका मैं काट के 7 सेंटीमीटर नहीं बना पाया. So this is the only idea that I needed to understand through this problem. Okay. Similar situation with Sham is that Sham is that he is doing the same thing, 9 centimeter and 9 centimeter, and his left out portion is 3 centimeters. Okay. Now, how can I proceed with this? Now, the very first thing that comes into my mind is that, which came to my mind is that I'll take this one part as a separate unit, and then I can probably say, okay, so 9 plus 7k is the length of the first stick. Similarly, for the second stick, I can say the length will be 12 plus 9, let's say not k, this time it will be n. Now this is very interesting. Now my question is, this is the length of the stick. Okay, this is something that came to my mind while I was reading this question. However, if I ask you, can you tell me what is the length of that stick, how will you even come to that? For example, this is something that can totally work. 9 plus 7k and 12 plus 9k, this can totally work. But what if let's take some numbers for k and n. Okay, so for k is equal to, obviously k cannot be 0, so k is equal to 1 and n is equal to 1. We will substitute for k is equal to 1, n is equal to 1, and there will be a value which will be equal for both these, because ultimately the length is same, right? I hope you understand that much. See guys, the idea is, again, let me give you some context. If you go by the division lemma, okay, division lemma, which is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, you can also understand this by that. But I'm saying I don't know, I don't remember division lemma. I have to solve it on my own now. Okay, so 7 1 is 7 plus 9 is 16. Okay, and this one is 9 plus 12 is 21. Does not work. 2. So 14 plus 9, that is 23. This is 18 plus 12. 18 plus 12, 18 plus 10 is 28 plus 2 is 30. Okay. 21 plus 9 is 30. Now I will stop at this. Okay, k is equal to 3 and n is equal to 2. I will stop at this point. I'll explain everything. What am I doing? Effectively, this n is equal to 30 and this k is equal to 30 represent what? This is the length. This is the length of the sticks. Okay, this is the length of the stick. I hope this makes sense. Now, if you read the question a little bit, you will be able to understand. You will go a little further and you will be able to understand this. This third person, Rakesh, comes into the picture. A friend of Ram and Sham pointed out that the sticks were the shortest of all those for which this was possible. Obviously, this makes complete sense. He took another stick of the same length and cut it into the parts of 8 centimeters each. Okay. The question is, what is the length of the stick that is left? Now, see, when I read it the first time, I thought that, these two lengths, I'm assuming that the length of the stick is 30 units, centimeter, millimeter, kilometer, light year, whatever you want to take, you can take it. Okay. The idea is वही है कि Rakesh is also now, cutting the sticks in 8, and then something of his also, the length is also left for Rakesh is also something. For Ram it was 2 centimeter, for Sham it was 3 centimeter. Our question is, what is the length for Rakesh? Now I know that you guys have already been able to say, अभी आपको समझ में आ गया है कि 30 सेंटीमीटर तो लेंथ है और 8 में ही डिवाइड होगा तो कितना बच जाएगा? 8 3 24, so 24 तक तो वो आराम से बना लेगा. ठीक है,
यानी कि मैं आपको अगर समझाऊं तो 8 8 और 8 तक तो वो उसका बहुत अच्छे से चलेगा, 8 8 एंड 8 परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट। और ये जो थोड़ा सा बच जाएगा, ये कितना थोड़ा सा बच जाएगा, 6 सेंटीमीटर बच जाएगा। सो दिस 6 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द आंसर। सो द आंसर टू so the answer to this question is 6 centimeter. I hope this make sense. एक बार पीछे जाते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। ओके ओके ग्रेट। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, this is also a good question. This is also an interesting question. Question says a square floor of dimension 72 by 72 has to be completely covered with rectangular tiles, each of whose length and breadth are in the ratio 3:2. Okay, the length in centimeter and the breadth in centimeter of each tiles are integer. Okay, what is the difference between the maximum number of identical tiles and the minimum number of identical tiles? So okay, I will give you guys like 30 seconds to understand this question. Not a very difficult question. Obviously some of you guys will already have some answers. See, ये तो मतलब बहुत ही बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब इस तरह के टाइल्स के क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग जब नंबर ऑफ टाइल्स निकालना होता है तो what we do is the area that is given, which is 72 into 72. At this point I am not even concerned about the feet, centimeter, whatever. Okay, at this point I'm only concerned about the the dimension. Okay, and now I will multiply the dimension of the rectangular tiles. Okay, but remember I cannot do 2 into 3, that is 6. I'll have to do 3k into 2k, something like that, which basically translate to 6k का square, not 6k. यहां पे ही सबसे ज्यादा लोग जो गलती करेंगे वो यहीं पे करेंगे, 72 into 72 upon 6k square. Now they have asked you about the range, basically maximum minimum बोला है कि what is the difference. तो सबसे पहले तो इसको काटते हैं 12 से, तो 12 into 72 upon k square. Now see, now read the question. What is the difference between the maximum number of identical tiles and the minimum number of identical tiles? Okay, how will we ever be able to find out what will be the maximum? Tell me what will be the maximum number of tiles with the help of this equation itself. Obviously it will depend on the value of k. I hope that much is sure. Okay, so whatever a good number in the denominator, when it cuts down the numerator, that will give me the maximum number of tiles. So far this is just an equation. Okay, so to maximize this equation, what I can do is probably I have to take the HCF of 12 and 72. What is the HCF of 12 and 72? Obviously 12 cut 72. Okay, 6 times, 6 2s are 12, yeah, 6 times वो 12 cut 72, so the HCF will be 12 itself. Now what do I mean by this 12? See, for the maximum number of tiles I need, what is the question? The difference between the maximum number of tiles and the minimum number of tiles. Okay, but let's calculate this thing. Okay, so let's do this. For k square, I'm calculating for k square. What will be the maximum value that I can? The number of tiles. Again, I'm emphasizing on this word, the maximum number of tiles. What number of tiles? Okay, so 12 into 72. Let me do it over here. 12 into 72 by 12 into 12. So this comes out to be 1. This comes out to be 6. Now, is this the maximum number of tiles? Is this the maximum number of tiles? Obviously not. This is the HCF gives me the minimum number of tiles. Okay, see, जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा फैक्टर आप डिनोमिनेटर पे रखोगे उतना छोटा से छोटा न्यूमरेटर आपको मिलेगा कटने के बाद, फ्रैक्शन. ओके, I hope you have been able to understand the idea. Now the idea is how will we find out the maximum? I hope you guys, maximum तो आप लोगों को दिख गया होगा. Maximum will be just substitute. You would have to substitute for k only, and the value of k only will give me the value. So the simplest answer would be to substitute k का value as 1. We cannot do it 0. So that is the only thing, right? So
Okay, so 12 into 72. सीधा सीधा 12 into 72. Let's see what is this. So this will be 720. Let me do the rough work here. 720 plus 144. 144, which is 864. Yeah, 864. And they have asked you the difference between this. So 864 minus 4, 864 minus 4 is 860. 860 minus 2 is 858. Okay, so B is the answer to this question. I hope this makes sense. Let me go back and see if there are any thing. Okay, let's go to the next question. All right, this is a TSD question. Ganesh and Harish start from the same point and run in the same direction on a circular track of length 1600 meters at 50 meter per minute, 40 meter per minute respectively. Peter start at the same time from the same point and run in the opposite direction at 30 meter per minute. Find the time taken in hours up to the instant all three meet for the third time. We don't have any formula, we don't know anything about a meeting for the third time, but we know something about the meeting for the first time, and that too when three people are running. Okay, and this is a direct concept based application based problem. Okay, so this will be as good as so I am calculating the time taken for them to meet for the first time. Okay, all three of them, time taken to meet for the first time. That is going to be the LCM of the track length by the first two, which is the 50 minus 40, because understand that Ganesh and Harish basically they are running in the same direction, so the relative speed will be the difference of their speeds. So I am not going to write 50 40, I'll just simply write 10, and the LCM of take any one of them. So I am taking this Ganesh only. 50 plus 30, this time this Ganesh and Peter, they are in the opposite direction, so this will be 1600 by 80. Okay, 50 plus 30, this is as good as 160, this is as good as 20. Okay, least common multiple of 160 and 20. Now tell me, is 160 a multiple of 20? Definitely. I mean, 160 is going to be the, I think, LCM, but if you want to probably calculate this also, you can calculate. Okay, but I'll just write it 160. Okay, it's not very difficult. 160 is a multiple of 20. Okay, वो 8 times से कट जाएगा तो anyways. So this is the time. Again, understand this is in minutes. So 160 minutes will be this thing. So what about 3? That will be 3 into 160. I hope that makes sense. Which is 3 6 18 40 minutes. Converting that into hour, we will multiply by 60. So this will become hour. 6 8s are 48, which gives me 8 hours. Okay. So the answer to this one will be this. Let's go to the next question. Okay, this is a good one. This is a good question, a simple type of a question you can say, but nevertheless doesn't matter. A, B and C have to make some electric switch working alone. A can make the switchboard, make one switchboard in 12 hours. B is 20% faster than him. C is 50% faster than him, and D is twice as fast than him. Okay, so one thing that I can do straight away is I can write for A, it is 12 hours. Okay, right now I am concerned about the rates at which they can do it. Okay, B and C I will explain in a while, but since it is written that D is twice as fast as A, so D will take 6 hours. Okay, and what about these two fellows? Now understand this thing very carefully.
B is 20% faster than him. 20% faster than mean what? 1.2 times B, that is equal to A. So something of that. Okay, you don't need to do anything like that, but this is something that goes in my head. Actually 1.2 times of A is equal to B. Okay, so this will become 12 by 1.2, which is 10 hours, and for C it will be similarly 12 by 1.5. Understand, this is 50% faster. Okay, this gives me 15 8s are 120, so this will be 8 hours. Okay, let me see if everything is correct. Yeah, 80 plus 40, correct. Now that I am looking at the total quantity of work, the total work that I need to do. सिंपल थिंग दैट वी कीप ऑन डूइंग एवरीवेयर. ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि पीछे कोई क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो टोटल वर्क जो है इनका एलसीएम होगा 12, 10, 8 एंड 6. ओके, मैं इसको डायरेक्ट यही पे कर देता हूं. 2 6 2 5 2 4 2 3. ओके, 2 3 5 2 3. ओके, दिस इज 10, 3 3 9, 9 into 4 38. I don't think it will be 360. I think it should be 120, because 120 is divisible by all of them. So where did I okay, so 3 is common, right? So 3 4s are 12. Yeah, 3 4s are 12. So 3 can be taken out. So I did, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर 3 को common ले लूँ, so these are primes, they will not make any difference. In any case it is 10, so these are prime, won't make any difference. So this is just 10. So 3 into 2, 6 into 2, 12. 12 into 10 is 120 units. Okay, 120 units, this is the units, that is the total unit. Okay, अब पहले वाले का efficiency अगर कैलकुलेट करें, efficiency of A, B, C and D. ठीक है, यहाँ के बाद तो आई थिंक आइडियली मेरे को सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, बट एनीवेज इसका 10 यूनिट्स पर आवर एफिशिएंसी है, दूसरे वाले का 12 यूनिट्स पर आवर एफिशिएंसी है, तीसरे वाले का क्या है, इसका 15 यूनिट्स पर आवर एफिशिएंसी है, और इसका 20 ही होगा बिकॉज D is 2 times efficient as this person. The first question is कि for making switch ABCD worked for 1 hour. Okay, so they worked for 1 hour. So total 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे? Let's 1 घंटे में सारे लोग काम कर रहे हैं. So 10, 20, 30, 50, 57. तो 1 घंटे में 57 यूनिट काम हो गया. A and B for the next 2 hours. A and B only work for the next 2 hours. तो अगर ये A जो है 2 घंटा काम करेगा, 1 घंटे में तो 10 यूनिट करता है, 2 घंटे में 20 यूनिट करेगा, और ये 24 यूनिट करेंगे. ठीक है, 1 घंटे में 12, 2 घंटे में 24. इफ यू एड दिस विल बिकम 44 units. Okay, totaling this to 7 and 4 is 11, 5 9 10, 101 units. And the question is, in how much more time A alone can finish or complete the remaining work? So 101 unit has been completed by all of them. What is the unit that is or how much work is remaining? So 19 units work is remaining. 19 unit work this fellow A can do at the rate of 1.9 hours. Okay, I hope that make sense. देखिए दोस्तों, एट दिस पॉइंट मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट इजी नहीं होता. आप लोग बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए. ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं. मेरे को थोड़ा सा नाटक करना अच्छा नहीं लगता, नहीं तो आप जानते हो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आजकल बहुत मार्केट में चल रहे हैं. एनीवेज 6 इज ऑल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम प्रॉब्लम. इसमें बस ये बोलते हैं सेम क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया, पीछे सॉल्व किया, वही चीज है. A works on the first day, B on the second, C on the third, D on the fourth, and then the same thing gets repeated until they completion of the work. Okay, if each person works 12 hours a day, in how many days 114 switchboards are 114 switchboards ready? See, basically वो ये कहना चाह रहे हैं
कि पहला दिन जो ए काम करता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी एंड चौथे दिन डी। मैं पूछना चाहता हूं कि 12 घंटे काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहा है 12 घंटे ही कर रहा है। द क्वेश्चन, द इनिशियल इंफॉर्मेशन हैज टॉक्ड अबाउट वर्किंग अलोन ए कैन मेक वन स्विच बोर्ड इन 12 आवर्स। अगर 12 घंटे ही काम करेगा ए एक दिन, तो वो एक दिन कितने स्विच बोर्ड बनाएगा? मेरा सवाल आपसे ये है। जब तक आप सोच रहे हो मैं थोड़ा सा पेन निकाल लूं। तो पहले 12 घंटे जो काम करेगा एक स्विच बोर्ड वो बना सकता है, बी 1.2 स्विच बोर्ड्स बना सकता है। आप देखो कैसे, बिकॉज 12 घंटे इसका ये 10 घंटे में अपना पूरा काम निपटा सकता है, लेकिन काम कितने देर कर रहा है? 12 घंटे कर रहा है। यानी जो 0.2 वर्क है, ये 0.2 वर्क ये कर देगा। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा इसको क्लियर करके बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया यहां पे। एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इन वन डे A will be able to make one switchboard, B will be able to make 1.2 switchboard, and this fellow, because this fellow is working how much? 8 hours. So in 8 hours he can complete. So in 12 hours how much he can do? In 12 hours he'll be able to do 1.5. I hope that makes sense. Okay, I hope I am not making any. Okay, yeah. So and this one will be simply ये 2 बना देगा. Okay, is that correct? Let me see. Yeah, so if I add now, if I add all of them, okay, I hope this made sense. Okay, I hope this made sense. अभी मैं उतना theoretical मेरे को जाना अच्छा भी नहीं लगता है, but I don't know ये चीजें लोगों को समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो इन्होंने 4 दिन में मिलके टोटल कितना वर्क किया? So 2, 3, 4, 5, 5.7. Let's go to the next one. So आप देख रहे हो कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी टुगेदर इन 4 days 5.7 ही था ना, देख लेते हैं एक बारी। हाँ, 5 to 7, 2, 3, 4, 5, 5.7 5.7 स्विच बोर्ड बनाते हैं कितने दिनों में? अब तो ये एकदम सिंपल वो बन गया ना, अब तो कोई भी सॉल्व कर देगा। 5.7 स्विच बोर्ड बनाते हैं 4 दिनों में, तो एक स्विच बोर्ड बनाएंगे 4/5.7 में। 114 कितने में बनाएंगे? 4/5.7 इंटू 114। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। 2 बार में ही चला जाएगा। 14, 10, 11 करेक्ट है। तो 80 days। नाउ द ओनली थिंग दैट यू हैड टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन इज दैट कि एक दिन में एक बंदा कितने स्विच बोर्ड बनाने के केपेबल है। अगर एक बंदा एक दिन 12 घंटे काम करता है 12 यूनिट पर आवर के एफिशिएंसी के साथ, तो वो कितना 1.2 ही बना देगा। आई होप दैट मेक्स सेंस। सिमिलरली अगर 15 यूनिट्स पर आवर के एफिशिएंसी से कोई 12 घंटे काम करेगा तो 1.5 वो बना देगा। ठीक है, और अगर 20 यूनिट्स पर आवर के स्पीड से वो करेगा और 12 घंटे बनाएगा तो 2 यूनिट वो बना सकता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग इस पे बाद में भी आ सकते हैं, अगर आप, मैं बाद में इसको एक बार और देख लूंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को उतना कॉन्सेप्चुअल जाना पसंद ही नहीं है। मैं इसको मॉक टेस्ट के जैसे सॉल्व करना ज्यादा पसंद करता हूं। ठीक है, एनीवेज लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। दिस वन इज ऑल्सो अ डिसेंट लेवल का क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स। ये शायद हमने सॉल्व किया था, आई डोंट थिंक मैंने उसका अपलोड नहीं किया होगा। एनीवेज, find the sum of the squares of the medians AD and CE drawn from two acute angled vertices of a right triangle ABC whose hypotenuse is 20. Okay, एक ट्राइंगल ABC है जिसका कि हाइपोटेनियस जो है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। सी द मोमेंट मेरे को एक ही साइड हाइपोटेनियस दिख गया 20, मैं सारे साइड निकाल सकता हूं बिकॉज मेरे को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है। ओके, 3, 4, 5, और मेरा किस्मत बहुत अच्छा है कि मेरे को 3, 4, 5 वाला ही मिल गया। सो आई कैन से कि इन दिस
5 represents the hypotenuse, so 5 times 4, so 4 is going to be my multiplying factor, so this is going to be 3 times 4 and this side is going to be 4 times 4. And remember that this is the, this CE line and this AD line, they are the medians, and what median basically does is it bisects the other side in equal ratios. Okay, तो अब आप एक चीज बताइए, आपको सारी चीजें दिख गए सामने, अब आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस। ये मीडियंस को पूछ रहे हैं कि इनका वैल्यू बता दे हमें, तो बता सकते हैं, आराम से बता देंगे। सी, अगर मुझे पता है कि ये टोटल 16 है तो ये 8 और 8 होगा, और ये अगर पूरा 12 है तो ये 6 और 6 होगा। तो इस ट्रायंगल में, एबीडी ट्रायंगल में हम लोग निकाल सकते हैं 12, 8 और दूसरा निकाल देंगे। तो एबीडी ट्रायंगल में अगर मुझे एडी निकालना है तो मैं सीधा स्क्वायर रूट कर दूं 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, विच इज, मैं डायरेक्ट लिखना पसंद करूंगा, 144 प्लस 64, विच इज √208। अब मेरे को सीई निकालना है, ठीक है, सीई निकालना है, सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और ये भी हाइपोटेनियस ही है सीई। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार 16 का स्क्वायर होगा। 16 का स्क्वायर आई थिंक इज, आई डोंट रिमेंबर, लेट्स डू इट। 6 6 36, 9 1 256 प्लस दिस इज या करेक्ट। सो और दूसरे वाला क्या है 16 और ये है 36। ओके 36, तो इसको करते हैं 6 6 12, 6 6 12, ओके, दिस इज 292। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि इनके आपको स्क्वायर्स बताने हैं, तो द मोमेंट यू स्क्वायर देम द स्क्वायर रूट विल गेट ओवर, ठीक है, वो निकल जाएंगे वहां से, और फिर आपको सिर्फ 208 को और 292 को ऐड करना है, और आई थिंक आप लोगों को आंसर आपके सामने दिख रहा होगा, विच इज 500। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें याद आ जाती हैं, कुछ चीजें याद नहीं आती, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, अब ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, आई थिंक और 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको फटाफट निपटाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी log 15 x square minus 25 x square minus 25 is less than equal to log 15 4x plus 35। सी, एक चीज मुझे यहाँ पे मैं करना चाहता हूं कि मैं इनको एक साइड पे लेके आता हूं, तो log 15, हालांकि एक प्रॉपर्टी है, अगर आप लोगों को याद हो तो, हालांकि प्रॉपर्टी चलो मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा, x square minus 25 माइनस log 15 4x plus 35 is 0। इफ बेसिस आर, लॉग जो है वो बेसिस में सेम है, तो हम इनको अब ये माइनस में है तो हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log m by n का m by n इज इक्वल टू log a माइनस log b होता है, ठीक है, और अदर log a, आप समझ गए ना, log a by log b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4x प्लस 35 लिख सकते हैं, और ये जो है ये log 15 लेस देन इक्वल टू 0 है। अब आप देखो इस log को जब उस साइड सेंड करेंगे तो 15 रेज टू द पावर 1 हो जाए, 0 हो जाएगा, सॉरी। तो x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4x प्लस 35 15 रेज टू द पावर 0, और इसको 1 भी लिख सकते हैं, और यहां के बाद थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 35। अभी देखो ये थोड़ा सा मैंने इधर उधर कर दिया है, बट आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 4x minus 25 minus 35 is 60, so this is 60 less than equal to 0। Let's do this 60, I think 10 and 6 will do it, 10 and 6 will do। x square minus 10x plus 4x minus 60 less than equal to 0, ठीक है। ये मैं
थोड़ा सा अपने दिमाग में करता हूं तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, आप लोग देख लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, इतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको दिख रहा है कि x माइनस 10 और x प्लस 4 होगा, तो डायरेक्ट कर देंगे x प्लस 4। सॉरी एक सेकंड, ये 4 नहीं होगा, ये 6 होगा। दिस इज गोइंग टू बी 6 बिकॉज 10 माइनस 6 इज 4, 10 माइनस 4 इज 6। ओके, तो मैं वही बोल रहा था कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। लेस देन इक्वल टू 0। अब वही जो बचपन से करते आए हैं, नंबर लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक साइड पे आपका -6 है, दूसरे साइड पे आपका +10 है, और आपको पता ही है कि जो दिस इज कॉल्ड, क्या मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, इट्स जस्ट दैट दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट। ठीक है, आई थिंक इफ आई डोंट रिमेम्बर, वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं। ठीक है, ये सब भाई आईआईटी वगैरह में ये सब भैया यूज होता है, जरूरी नहीं है ये वेवी कर्व मेथड, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, आपसे पूछा था लेस देन इक्वल टू, तो जो रीजन होगा वो ये वाला रीजन होगा। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, तो -6 और 10 पे इस तरह का ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, हमारे पास ऐसा गिवन है एक ऑप्शन विच इज दिस वन। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। अ मैन टुक अ लोन ऑफ 25,000 with the promise that he would pay back 500 at the end of the first month, and from second month onward he would pay ₹50. Okay, pay ₹50 more than what he has paid in the previous months. Okay, so see, this is not a SICI question, this is a प्रोग्रेशन टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कि पहला जो आपका टर्म है उसको आप 500 एज्यूम, सॉरी, जो पहला टर्म है उसको 500 एज्यूम कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस आप 50 एज्यूम कर सकते हो। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ये तो नहीं पता है, वही तो निकालना है। क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ टर्म्स, बट द nth term we can calculate, which is 25,000 in our case. Okay, 25,000. Now if you have so much of information with you, basically they're asking you कि tn-1 का वैल्यू क्या है ये बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, मैंने आपको टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, ये होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो इसमें, एक जगह पे आके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज वेरी इजी। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, इसको आप लोग कर लो। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, एंड आई नो दैट somebody who is seriously taking these sessions, they will do such problems. ठीक है, this is the last question, this is the last question. What is the probability of a year to be a leap year? See, ये ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर 400 साल में आपको ये चीज, अब मैं अभी बता देता हूं, आप चाहो तो याद कर सकते हो। ये प्रोबेबिलिटी एक तो आता नहीं है कैट में, ठीक है, और आएंगे भी तो इसी तरह के घटिया सवाल आएंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, हर 400 साल के, हर 400 ईयर्स के पीरियड में 97 लीप ईयर्स होते हैं। ठीक है, ये एक, दिस इज द ओनली एजेंडा दैट दे आर ट्राइंग टू प्रॉब्ली टीच यू। सो 97/400 ये जैसे ही देखोगे टिक करके आगे निकल जाओ, तो इसमें कुछ सीखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा समझना था कि 400, हर 400 ईयर्स के गैप में, रादर हर 400 ईयर्स में 97 लीप ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ईयर टू बी अ लीप ईयर इज 97/400। देखा नहीं कि टिक मार के आगे निकल जाओ, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। ओके गाइज, सो दिस इज इट फॉर द सेशन एंड आई होप यू गाइज एंजॉय। मुझे बहुत मजा आया ये सेशन बनाते हुए, आई होप आप लोगों को देखते हुए भी मजा आया होगा। कोशिश करिए हम लोगों ने इसको 1 घंटे से कम में 10 क्वेश्चन को करने का। ठीक है, सो जितना हो सका मैंने अपना बेस्ट करा है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि जो पीडीएफ्स आपके साथ शेयर होगा उन पीडीएफ्स को सॉल्व करिए। नेक्स्ट सेशन जो होगा प्रोबेबली एक लाइव सेशन होगा या एक रिकॉर्डेड सेशन होगा DILR के ऊपर, शायद से वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि
एक दिन हम लोग लाइव सेशन करेंगे, एक दिन हम लोग रिकॉर्डेड सेशन करेंगे। और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि DILR का रिकॉर्डेड सेशन होगा, हो सकता है DILR का भी लाइव सेशन होने लगे, ठीक है। तो ये तो बस आप लोगों के सामने प्रेजेंट होने के लिए बता रहे थे हम। चलिए, थैंक यू। I hope you guys enjoyed the session, and if you know the drill. You have to subscribe to the YouTube channel, you have to come and join us in the Telegram group, in the Facebook group, and you have to support us. Okay, thank you.